Hello students, after azeotropic mixture, that minimum boiling azeotrope and maximum boiling azeotrope, now we are going to start with the next topic of the solution chapter, that is colligative property. So let's listen. Colligative properties. So first understand the meaning of colligative. Co means together, ligate means to bind. So whatever the solute particles present together in the solution, this property depends upon the number of solute particles. So listen, colligative properties are the properties of ideal solution or dilute solution, and these are the properties which depends upon number of solute particle. Important word is solute particle. It means it does not depend upon solvent particle or upon the molar concentration of solute in the solution. But solution, this solution, it is of which type? It should be either ideal or dilute. Fine. So these are the colligative properties. Once again listen, colligative properties are the properties for dilute or ideal solution and depends upon the number of solute particle. Important is नंबर, और किसका नंबर? सोल्यूट का, ठीक है, जो कि सॉल्यूशन में कम मात्रा में पाया जाता है. सो दीज आर दी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर कम कितना हुआ? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हुआ? डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट. हाउ मच फ्रीजिंग पॉइंट इज डिक्रीज. एंड द लास्ट वन इज द ऑस्मोटिक प्रेशर. So one by one we will study all these osmotic pressure, all these colligative property. These colligative properties actually it helps in the calculation of molar mass of solute. What I said, all these colligative properties are what helping us in calculation of molar mass of सोल्यूट एक्सपेरिमेंटली. मतलब सोल्यूशन में जब हम सोल्यूट को डिसॉल्व कर देते हैं उस समय उसका मोलार मास कितना रहता है, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें कैलकुलेट कर देती है. सो व्हेन प्रैक्टिकली व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द मोलार मास ऑफ द सोल्यूट, दैट मोलार मास ऑफ द सोल्यूट इज कॉल्ड ऑब्जर्व्ड मोलार मास. ठीक है, जब सॉल्यूशन में मैंने डिसॉल्व कर दिया सोल्यूट को और डिसॉल्व करने के बाद मैंने एक्सपेरिमेंट करके उसका मॉलिक्यूलर मास निकाला, तो उसको कहते हैं ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एसिटिक एसिड की, CH3COOH, मोलार मास कैसे हम निकालेंगे? विदाउट एक्सपेरिमेंट, जो कि हमें पहले से ही पता है थियोरेटिकली. 12 प्लस 1 इंटू 3 प्लस फिर से एक और कार्बन, तो 12 प्लस ऑक्सीजन 2, तो 16 इंटू 2, फिर एक और हाइड्रोजन, तो 1. सो ये जो हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला देखकर, इस मोलार मास को हम कहते हैं नॉर्मल मोलार मास. ठीक है, इस मोलार मास को हम कहते हैं नॉर्मल मोलार मास. और एक्सपेरिमेंट करके जब हम सोल्यूशन में से निकालेंगे तो उस मोलार मास को हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड मोलार मास. तो जैसे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें किस में हेल्प करती है? द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हेल्प इन द कैलकुलेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड मोलार मास ऑफ सोल्यूट. सो वी विल स्टडी ऑल दीज प्रॉपर्टीज इन डिटेल. सो वी विल सी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. सो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर. ठीक है, सो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर व्हेन इट विल टेक प्लेस. किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैंने बोला कम हो रहा, तो ये कम कब होगा? जब होगा कि हम जो सोल्यूट जो डाल रहे हैं वो सोल्यूट नॉन वोलेटाइल नेचर का है. ठीक है ना, बिकॉज वेपर प्रेशर में कमी आ रही है. सो लोवरिंग इन द वेपर प्रेशर इन दिस सॉल्यूशन व्हेन इट विल टेक प्लेस, it will take place when the solute it is of non-volatile in nature. Then only from the beaker
Okay, then only from the beaker where the solute and solvent both molecules are present, like this. For example, these small molecules are of solute and big molecules are of the solvent. So this solute, it is non-volatile in nature, so it will not convert into vapor. वो vapor में नहीं बदलेगा. Only the molecules of the solvent will convert into vapor because they are only volatile in nature. So इस कारण क्या होगा, vapor pressure solution का कम हो जाएगा. So this is what relative lowering in vapor pressure. So remember, relative lowering in the vapor pressure we will calculate for the solution in which the solute it is of non-volatile in nature. तभी हम इसमें calculate करेंगे. ठीक है. So अगर ऐसा है कि solute non-volatile nature का है, तो जो भी वेपर प्रेशर सोल्यूशन का है, PS इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है. अब वेपर प्रेशर सोल्यूशन का किस कारण है? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट. जैसे कि मैंने कहा सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है. सो डेफिनेटली PS अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ, PS वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन is directly proportional to the mole fraction of solvent, that is XA. ठीक है. And now the proportionality sign is removed and the constant, that is P naught A, has come. As I said that according to Rolle's law, PS is the vapor pressure of the solution is directly proportional to the mole fraction of the solvent which is of volatile nature and solute is non-volatile in nature. Proportionality sign is removed and constant P naught A. What is P naught A? Yes, P naught A is the vapor pressure of pure solvent. ठीक है. So now you know that if in the solution, this solution is binary in nature, मतलब सिर्फ दो ही कंपोनेंट है उसमें, A और B. ये दोनों मिलकर सोल्यूशन बना रहे, तो हमको मालूम है XA plus XB equals to 1. Because both they are making the solution, so that is why XA plus XB equals to 1. So XA equals to 1 minus XB. It's correct. So we are going to substitute the value of XA in this equation. This value is substituted. So what you will get? PS equals to P naught A 1 minus XB. This value is substituted. Now P naught A हमने साइड चेंज किया यहाँ पे. So PS upon P naught A equals to 1 minus XB. Now XB equals to what? XB अगर मैंने इस साइड लिया, okay, so साइड चेंज किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड में XB लिया, so 1 minus PS upon P naught A. Now take the LCM. So what you will get? XB equals to P naught A minus PS upon P naught A. ये हमारी मतलब की चीज निकली. This is what exactly what P naught A minus PS, मतलब हम जो प्योर वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का उसमें से माइनस कर रहे हैं. क्या माइनस कर रहे हैं हम? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब उतना वेपर प्रेशर हमारा कम हुआ. एंड नाउ वी आर डिवाइडिंग विद P naught A, so it is relative. I think it's clear. Now it has come relative lowering in vapor pressure. ठीक. So once again you see the equation. P naught A क्या था? P naught A is the vapor pressure of the solvent. जब solvent अकेला ही बीकर में था, एक बीकर में सिर्फ solvent present है, only solvent is present. So ये सारे molecules vapor में बदल रहे थे, इसका अच्छा खासा vapor pressure था. इस समय जो vapor pressure था उसका, that is called P naught A. ठीक है. But in this solvent, इस solvent में मैंने क्या ऐड कर दिया? B को ऐड कर दिया. B is what? Solute, जो कि non volatile है. So in this way B has come in between the molecules of the solvent, and what the B has done, जो कि non volatile nature है, B is, it is of non volatile in nature, so it has decreased the vapor pressure. So that is why how much decrease in the vapor pressure? That has come P naught A minus PS upon P naught A is your relative lowering in vapor pressure, and yes, it is equals to mole fraction of the solute. अब मैं इसमें solute कितना डाल रही हूँ उस पर डिपेंड करता है. How much solute is added to the solution, it decreases according to that.
अगर मैंने इस सोल्यूशन में 1 ग्राम सोल्यूट डाला तो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली lowering in vapor pressure will take place. If in the another beaker, if I am taking more amount of the solute, then it will decrease the vapor pressure in large amount. For example, here 1 gram of the XB is added. Now in this case, in this solution, second solution, if I am going to add more solute, so more number of the particles will come in between. Okay, and here for example 2 gram of XB is mole fraction is present, then more number of solute particles present on the surface, ज्यादा present है surface पे, तो ये vapor pressure को क्या कर देगा, vapor pressure को और कम कर देगा इस तरीके से, तो solvent हमारे कम vapor में बदलेंगे. So I think it is clear that relative lowering in vapor pressure is equals to mole fraction of solute. And what is the nature of the solute? Solute is non-volatile in nature. Now we will see calculation of molecular mass of solute with relative lowering in the vapor pressure. What? Calculation of molecular mass of solute. So this is the formula for the relative lowering in the vapor pressure. That XB is the mole fraction of the solute. Okay, and it is P naught A is the vapor pressure of pure solvent. PS is the vapor pressure of solution, and this is what relative lowering in vapor pressure. XB is the mole fraction of the solute. So XB equals to, we know XB equals to NB upon NA plus NB. Okay. So we have substituted this value here. So in place of XB, now NB upon NA plus NB equals to this relative lowering in vapor pressure. NB is the number of moles of the solute. NA is the number of moles of the solvent. So I can write WB upon MB. WB, it is the weight of the solute in grams. MB is the molecular mass of solute. So substituted here. Same for the solvent. WA upon MA. WA is the weight of solvent in grams upon molecular mass of solvent. Plus for NB, say that is WB upon MB. Okay. So what happened here? This is WB, it is the weight of the solute. We know that in the solution, the weight of the solute is always less. So this value is already very less WB. And we are dividing this WB with the molecular mass of the solute. And that is, it is present in the denominator. So the value of this will come very, very less. So WB upon MB, as it is very, very less, we can neglect for the simplification of the calculation. So what has come now? WB upon MB, WA upon MA, as we are neglecting this term for the simplification. Now it has become equals to P naught A minus PS upon P naught A. So now WB, MB, denominator MB, then WA, it has come on numerator MA equals to relative lowering in vapor pressure. Now our aim is to calculate what molecular mass of the solute, and in this molecular mass of the solute is what? This MB. So MB, change the sign, MB equals to, this will come in the denominator. Okay, so WB into MA upon WA, and this relative lowering in vapor pressure, on changing the side, it will come on the what? Denominator side, and this is what your MB. So in this way we can calculate molecular mass of solute also with the help of relative lowering in vapor pressure. And what is this? This is colligative property of ideal or very dilute solution. So thank you this much in this video.